Assalamu alaikum everybody. Basically, I'm re-recording the demo lecture that we had on Monday. Basically, there was some issue with the audio and my OBS studio didn't record my audio. So I'm re-recording it for everybody, those who missed, especially those who missed. So let's see. Basically, I started the class by telling you the features of this demo class. So first of all, you'll be getting past paper booklet. Past paper booklet में there will be a lot of questions, around 200 to 300 MCQs and around 25 questions from your paper 2. Let me show you an example. So this is an example of your past paper booklet. ये रही पूरी. It has a lot of MCQs and then end में आपकी PDF marking scheme भी दी हुई है. Beside this, it has paper 2 questions as well and उसकी भी marking scheme दी हुई है at the end of the paper. ये रही marking scheme. Okay, so this was the first feature, past paper booklet. Here, this is a topical booklet, so we'll be getting one for each chapter. Beside this, you'll be getting worksheet. Let's say you want to track your progress कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है and if I'm teaching it properly या नहीं and you want to check that information या फिर you want to track your progress for your own self तो उसके लिए there are worksheets and each worksheet there will be 6 questions. You will be given 2 worksheets for each chapter. 6 questions in one worksheet. This is an example of your worksheet for cell structure. So this worksheet has 12 questions. Sorry, 6 questions. You can solve this worksheet and send it to me on WhatsApp. या फिर you can check it yourself as well. And the marking scheme is given at the end of your worksheet. ये रही आपकी marking scheme. सही है. So do try to solve this worksheet timely. इसके अलावा there will be bi-monthly test. Every 2 months we'll be having test. पेपर 1 का टेस्ट होगा ऑन योर प्लेटफॉर्म नोन एज टेस्ट मॉस. सही है. आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा फॉर एग्जांपल 8 to 12 PM. जब भी आपको टाइम मिले आप सॉल्व कर लो टेस्ट 20 मिनट्स 40 मिनट्स 50 मिनट्स बैठ के. फिर देयर विल बी सेपरेट टेस्ट फॉर टेस्ट पेपर 2 जो आपके गूगल क्लासरूम के थ्रू होगा. द PDF विल बी अपलोडेड ऑन योर गूगल क्लासरूम. अगेन आपको टाइम फ्रेम दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल 8 to 12. जब भी आप फ्री हो आराम से जब भी आप फ्री हो उसको आराम से सॉल्व करके अपलोड कर देना. फिर there will be daily classes except Saturday and Sunday. अगर मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी हुई तो it will be on Saturday, but on Sunday there will be no class at all. फिर most of the students are confused कि अगर हमारे पास पेपर प्रैक्टिस होगी या नहीं होगी, enough past paper practice होगी या नहीं होगी, कितनी होगी. Let me show you an example. These are all the past papers that I'll be doing with you guys. ये सारे past papers I've already solved this with my previous batch. तो ये आपके साथ भी करेंगे solve and as well as the latest one. इसके अलावा we also do gas paper जो end पे आते हैं. From your crack A level एक website है वहाँ पे there is gas paper uploaded by them. तो हम वो भी करते हैं at the end of the course. So there will be around 15 to 20 paper 1 and paper 2 past paper practice. Everything will be on your Google Classroom. All the updates will be on your WhatsApp group. Class की timings will be shared on your WhatsApp group. And I think आज हमने finalize भी कर लिए class की timings. So you can check your WhatsApp group for the timings. Now let's move on to the lecture, demo lecture, basically on cell structure. This is the very first chapter of your AS biology. Since I'm re-recording this, I will go through the concept थोड़ा सा जल्दी. Let's see. So जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाती हूँ आई ऑलवेज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस ताकि बच्चे के लिए इजी हो जाए टू अंडरस्टैंड. एंड यू कैन यूज दिस एज अ ट्रैक रिकॉर्ड एज वेल. चेकलिस्ट की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो कि मेरा सेक्शन 1 की तैयारी हो गई है, मेरी सेक्शन 2 की तैयारी हो गई है इन दिस वे. So this chapter is divided into 2 sections, living organisms and cell structure, and section number 2 is microscopy, which we'll be doing at the end. क्योंकि काफी dry सा topic है, so I usually keep it at the end. Section number 1. Let's see. All the living organisms are subdivided into 5 kingdoms. आपके course में you do not need to study about these kingdoms, but if you're going to do या give your MDCAT का exam तब आपके सारे kingdoms in detail पढ़ने पड़ेंगे. And if you need help in MDCAT in any way, books चाहिए हो, notes चाहिए हो, past paper चाहिए हो for your MDCAT, या फिर let's say आपको biophysics chemistry में से कोई topic समझ नहीं आ रहा है and you want guidance on that, तो तब भी आप मुझे message कर सकते हैं and you can let me know. I will help you in any way possible. सही है. So your living organisms are divided into 5 kingdoms. कौन से kingdom? Bacteria, Protoctus, fungi, plant and animal. अच्छा, these 4 kingdoms from Protoctus to animals they are eukaryotic. सही है. Whereas bacteria is the only one kingdom which is prokaryotic. But viruses in kingdoms में नहीं आते. Viruses are not classified into living kingdoms. Do you know एक interesting सा fact, जब virus आपके host cell से बाहर होता है it is considered as a non-living thing.
because ये कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता जब ये आपके सेल से बाहर होता है. As soon as it enters the host cell, it starts to use the protein machinery of the host cell, and then protein machinery, basically your ribosomes, उसके थ्रू मल्टीप्लाई करता है एंड रेप्लिकेट करता है एंड स्प्रेड इन योर बॉडी, which is why viruses का अपना एक separate kingdom है. Now prokaryotes. I told you guys how to define prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes are those cells that do not contain a nucleus or any other membrane bound organelles or organism that lack a true nucleus. ये definition आप इनके name से भी determine कर सकते हो. Prokaryotic basically Greek word है and it is broken down into two terms. Pro का मतलब होता है before, karyotes का मतलब होता है nucleus. So before nucleus. Eukaryote are those organisms whose cell contain a nucleus and other membrane bound organelles or organisms with true nucleus. In the same way, आप eukaryotes के भी break कर सकते हो two terms में. Eu means after your true nucleus, karyote का मतलब होता है nucleus. So basically, सिर्फ आपके eukaryotes में true या proper nucleus होती है that is surrounded by a cell membrane with nuclear pores जो हम पढ़ेंगे in our upcoming classes. Whereas prokaryote इनकी naked membrane, naked DNA structure होता है, बिल्कुल circular सा होता है and it is not surrounded by any nuclear membrane. अच्छा, also ऐसा माना जाता है by scientists कि prokaryotes होते थे पहले and then prokaryotes went some type of evolution जिसकी वजह से we got eukaryotic cells. So eukaryotes are thought to have evolved from prokaryote more than 2 billion years ago. These are the two types of nucleus. Nucleus can be true या फिर nucleus can be fake. Fake nucleus या circular DNA is found in your prokaryote. Prokaryote is basically a bacterial cell. Whereas true nucleus is found in your animal cell या फिर plant cell in a way in your eukaryote and it is surrounded by a nuclear membrane and has DNA within it. What is a true nucleus? किस तरह define करोगे? In case they ask you in your paper, a true nucleus contains genetic material, DNA, enclosed within a nuclear membrane. And it is surrounded by nuclear pores. Nucleolus भी होता है इनके अंदर, heterochromatin भी होता है, euchromatin भी होता है. ये सब हम पढ़ेंगे in the second lecture. Here, I told you guys the size of typical bacterial, animal and plant cell. You should know this as a part for your paper 1. Paper 1 में ये बहुत पूछा जाता है. अच्छा, also one more pointer, डायरेक्ट नहीं पूछते. ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन में आपको डायरेक्ट नजर आ जाए 0.5 to 5.0 माइक्रोमीटर. दे विल यूजली गिव इट इन नैनोमीटर. माइक्रोमीटर में भी देते हैं बट बहुत रेयरली. सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं एंड मिलीमीटर में भी दे सकते हैं. फॉर दिस यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट द वैल्यू एंड उसकी मैं इजी ट्रिक बताऊंगी इन द टॉपिक माइक्रोस्कोपी. सो वेट फॉर दैट. अच्छा, so these are the ranges of diameter for a typical bacterial cell, animal cell and plant cell. ये आपको by heart learned होना चाहिए क्योंकि they do ask this in your paper 1. 0.5 to 5 micrometer in your bacterial cell, 10 to 30 micrometer in your animal cell and 10 to 100 micrometer in your plant cell. Here we saw the microscopic structures of a plant and animal cell. Acha. Another pointer which I told at this point stage was कि आप ये कार्टूनिक डायग्राम्स नहीं आएंगे. You should make yourself familiar with real life या इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स. एक्चुअल सेल आपको अब आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, स्पेशली योर सेल ऑर्गेनेल्स. ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए फ्रॉम योर एक्चुअल सेल विच इज सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बट फॉर रेफरेंस लेट्स रिकैप आपने ओ लेवल में क्या पढ़ा था. यू स्टडीड राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म. ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े हैं अपने ओ लेवल में. एंड यू नो प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है बट एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, विच इज वाई एनिमल सेल काफ़ी इरेगुलर शेप का होता है एंड इसकी अरेंजमेंट भी काफ़ी इरेगुलर होती है. लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एनिमल सेल एंड दिस इज योर प्लांट सेल. इफ़ यू सी कितने रेगुलरली अरेंज हुए हुए हैं, पैक्ड हुए हुए हैं, काफ़ी अच्छे से प्यारे से शेप में अरेंज हुए हुए हैं. बट इफ यू लुक एट दिस एनिमल सेल, काफ़ी हैपहैज़र्ड वे में अरेंज हुए हैं, उनका शेप इतना इरेगुलर सा है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर प्लांट सेल. दिस इज योर न्यूक्लियस. इस तरह आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए फ्रॉम योर actual electron micrograph. This is your cell wall and I will teach you in the upcoming classes किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं. Here we studied the ultrastructure of an animal cell. Ultrastructure basically refers to an image produced by an electron microscope. So if you look at the animal cell under an electron microscope, आपको ये सारे structures नजर आएंगे. You'll see centrioles, they are at right angle to each other.
फिर आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएगा विद 70 राइबोसोम्स। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स नजर आएंगे, इनके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्ड हुआ हुआ होता है। यू सी द साइटोस्केलेटन। आपके जो सेल्स में साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये इस तरह फ्लोट नहीं कर रहे होते, यानी एक जगह से फ्लोट करके दूसरी जगह नहीं जाते। दे बेसिकली मूव बाय द हेल्प ऑफ योर साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली सीन इन द मूवमेंट ऑफ योर वेसिकल। जब वेसिकल्स को यहाँ से जाना होता है, आपकी आर ई आर से जाना होता है टू योर गोल्गी, तो आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं साइटोस्केलेटन के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके थ्रू आपके वेसिकल्स मूव करते हैं टू योर गोल्गी बॉडी। या फिर अगर सेल से बाहर जाना हो तो इट विल मूव टुवर्ड्स योर सेल मेम्ब्रेन। एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा एंड इट विल मूव आउट। ये सब आप पढ़ोगे इन योर फ्यूचर क्लासेस। फिर यू हैव द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, फ्री राइबोसोम्स, स्मूथ आर सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। अच्छा, it will take you time to identify and learn these features and the structures. इसके लिए मैं क्यूट सी आपके लिए एक वर्कशीट बना दूंगी which will help you how to identify। वो आप 2 to 3 times प्रिंट कर लेना and do solve it once a week। सही है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत। I will send it in upcoming days once I'm confirmed कि कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो I will send it in your GC inshallah। This is an electron micrograph of your cell, and as I was saying you should be able to identify कौन से structure हैं, तो हमने वही थोड़े से identify किए थे। सेल मेम्ब्रेन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में नजर आ रहा है, सेंट्रियोल्स नजर आ रहे हैं। सेंट्रियोल्स इज particularly difficult to identify but we were able to distinguish। किस तरह we'll see in your upcoming classes। Nucleus, फिर your Golgi body and your lysosomes। Lysosomes are specialized vesicles released from your Golgi body। फिर we saw the ultrastructure of your plant cell। ये रहा। This is how your plant cell looks like under an electron microscope। मैंने आपको कार्टून एक डायग्राम भी दिखा दिए and I've shown you the real actual diagram as well, ताकि जब पेपर में इन दोनों में से किसी में से भी आए you're able to do या solve the question very easily, आराम से। And these are usually marks gaining question। सही है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कभी भी लीव आउट मत करना, एक एक मार्क आपका ग्रेड बढ़ा देता है। सो मेक श्योर अच्छी तरह अपने आप को ईजी करके सारी तैयारी करके जाओ। So this was the structure। cell membrane होती है, cell wall, chloroplast, starch grains। You have plant cells do not have centrioles। सही है, ये आप याद रखना। Centrioles are only present in your animal cell। We have plasmodesmata। Double membrane is found in your nucleus, mitochondria and chloroplast। Also remember राइबोसोम के बाद कोई भी न्यूक्लियस नहीं होती। सही है, ये हम अपकमिंग क्लास में देखेंगे। Whereas your lysosomes जो आपके गोल्गी बॉडी से आते हैं, they are surrounded by a single membrane। You have tonoplast। Tonoplast is basically the membrane of your large permanent vacuole and cell sap। Plant cell में इतनी बड़ी vacuole क्यों होती है? ताकि your chloroplast they can be pushed towards the edge of your plant cell to absorb optimum sunlight। Here we saw the electron micrograph of your plant cell। This is the chloroplast, vacuole, and then middle lamella। I've shared this PDF on your group। Do go through these notes and try to identify if you're able to solve these questions or not। सही है? अच्छा, this was it for the demo class। The second lecture will be available in some time, so you can go through that as well and treat it as a demo class and let me know your decision। See you tomorrow inshallah।